हे विचार खरोखरच सर्व जणांना खूप मोटिवेशनल असणार आहेत. कारण आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की आता सद्यस्थितीमध्ये आपण पॅन्डेमिक मध्ये 2-2.5 वर्ष घरी होतो, आपल्या फॅमिली बरोबर होतो. परंतु जेव्हा प्रोफेशनल लाईफचं तुम्हाला टच येईल आता आणि प्रोफेशनल लाईफ मध्ये आल्यानंतर आपण कसं वागायला हवं, कसं बोलायला हवं, आपले विचार कसे असायला हवे, तर हे एक मूर्तिमंत उदाहरण तुमच्या समोर आहे हुसेन सरांच्या माध्यमातून, की जे आपल्याला आज सर्व मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि अशाच प्रकारे ह्या पूर्ण ह्या आठवड्याभरामध्ये जे जे आपल्याला SPDCच्या या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जे काही कार्यक्रम्स आहेत, याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पीकर्स जे उपलब्ध होणार आहेत, यांचं आपल्याला मार्गदर्शन हे खूप अमूल्य असणार आहे. हा तुमच्या जीवनाचा एक टर्निंग पॉइंट असणार आहे. कारण प्रत्येकच गोष्टी ह्या अभ्यासातून शिकता येत नाही, त्या काही गोष्टी आपल्याला अनुभवातून आणि समोरच्या व्यक्तींच्या मार्गदर्शनामधून सुद्धा आपल्याला ऐकायला मिळतात. तर अशा या व्यक्तिमत्वाचं मी इथे खूप खूप स्वागत करतो. डॉक्टर हुसैन सर जी, यहाँ से आपको प्रणाम और ऐसे ही हम लोगों के ऊपर कृपा बना के रखिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गिव माय वर्ड्स for my valuable person in my life, that Dr. Hussain sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Parag Patel sir. मैं अभी हुसैन सर से नम्र विनंती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें. मैम, with your due permission, मैं थोड़ा सा कैंपस इंटरव्यू है, इसलिए मैं यहाँ से अभी क्विट करता हूँ सर. ओके सर. थैंक यू सो मच. ओके सर. Namaskar everybody and good morning to all of you. Respected madam, all other teaching staff, non-teaching and particularly my dear students. You see, आज का दिन वैलेंटाइन डे भी है. Valentine Day is a symbol of love. It is celebrated all over the world. और ऐसे दिन आपका ये SPDC का प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो यू आर वेरी लकी. तो सबसे पहले आप सभी को वैलेंटाइन डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपने इंटरनेट पे या कहीं पे वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़ा होगा. It is celebrated since more than 1500 years ago. इसका इतिहास 1500 साल पुराना है. एक सेंट वैलेंटाइन थे और उनके सम्मान में ये वैलेंटाइन डे का फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था. एंड इट्स अ सिंबल ऑफ लव. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर. सो आप सभी के प्रति भी मैं अपना प्रेम अभिव्यक्त करता हूं. एंड देन वी गो अहेड विद दिस अवर टॉपिक. You see, I have to speak on the theme of personality development. आपके बहुत सारे स्पीकर्स इसमें ज्वाइन होंगे. एमिनेंट स्पीकर्स विल बी देयर. They will speak many things on personality. They will give you sophisticated definitions of personality and a lot of things they will talk about. मैं एक बहुत ही जनरल से शुरुआत करता हूं आपकी बेसिक से. Suppose you are sitting in your classroom. You are sitting in your classroom and somebody comes there in the classroom. Somebody comes at the door of the classroom. He stands there only for 40 seconds. He does not talk anything. He does not speak with anybody. You don't know his name. You don't know his biodata. You don't know anything about him. And that the person has gone. But you make an image of that person. You start thinking about that person कि वो आदमी किस तरह का होगा. You will make an image of that person in your mind कि he will be really a highly educated intellectual person. और नहीं, वो तो कोई छपरी किस्म का आदमी था. On what basis you make this imagination? On what basis this idea comes in your mind? You see, from the clothing of that person, what kind of cloth he was wearing, what kind of shoes he was wearing, what was his hairstyle. Of course, they are important, they are secondary. The prime thing is his facial expressions, his body language, his eye movements, and from there you make an impression that what kind of person he was.
So you see, your body language becomes very important. It gives a very deep, very long lasting impression on the person you are facing. It gives a very important impression. Your body language, your facial expressions, and your eye movements, the way you talk, the way you interact, these things have a very important impression, and actually they are the part and parcel of your personality. They define your personality. You see, in personality, not only your body language and these things are important. You see, all around you there is a halo, there is an aura, जिसको हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल. आपके चारों तरफ एक एनर्जी का आभा मंडल होता है. वो आसानी से हमें डायरेक्टली हमें नहीं दिखाई देता, बट वी ऑलवेज फील. You see, when you go with your you see, there is a person you like very much, you feel comfortable with him, and there is a person with whom you do not feel comfortable. Why it is so? Because the aura of that person is of that kind. जिसका आभा मंडल इतना प्रभावशाली होता है, उसके पास अपने आप लोग अट्रैक्ट होकर के जाते हैं. And that Abha Mandal is made up of micro energy particles which are moving all around you. And these micro particles actually because of your thoughts, वो आपके विचारों की वजह से आते हैं. So ultimately the most important thing in the personality is your thoughts. Your thoughts will govern your body language. Your thoughts will govern your behavior. Your thoughts will govern the way you communicate, you talk, you behave. So your thoughts will give the ultimate impression. So you should be able to control your thoughts. You should have the positive thoughts. You must have the creative thoughts. You must have the constructive thoughts, and you will always have a good personality. It is so simple. There is no specialization required for this. Think positively. Have a positive attitude. Have a graceful attitude, and be always grateful to the universe. Universe has given you many things. You see, we always complain कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. But remember one thing always, जब आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास अच्छे शूज नहीं है, तो उस आदमी की तरफ देखिए जिसके पास पाँव ही नहीं है. You always have something for which you can thank the universe, you can thank the Lord, and of course you can try for getting even more better. So that will give you a feeling of gratitude, and that gratitude will give a grace to your personality. So this is something which is very much important. You see, when you go for a job, after your completion of education, you go for a job. What is the purpose of interview? Why they call you for interview? Whatever is your technical skill, it is reflected in your biodata. Because you already passed the written examination, so your technical skills are known to them. Your communication skill, that can also be judged by the written examinations. Then what is the purpose of interview? The purpose of interview is not to judge your skills and communication skill, but it is to judge your personality, whether you are suitable for the post for which you are coming. अमेरिका में जैसे जो प्रेसिडेंट बनता है, you see, वहां पे कहते हैं कि what American president speaks is not important. How he speaks is important, because everybody speaks the same thing. Whosoever will become the president, he will speak the same thing, but the way he speaks is important. So you see, when you go for the interviews, your impression comes because of your personality, and personality is very important, particularly when you are occupying a managerial post. At managerial post, you are not supposed to work directly. You have to extract work from the others, and you can extract work from the others only through your personality. And even if you become a teacher, you see, हमारे यहाँ टीचर को आचार्य कहा जाता है. आचार्य का मतलब क्या? जिसके आचरण से कुछ सीखने को मिले, जिसका बिहेवियर हमको कुछ सीखने को दे, उसे आचार्य कहा जाता है. He is called as the teacher. A teacher is a role model for the students, and the students will learn from the personality of the teacher.
Many things they will learn from the personality of the teacher. In fact, this personality development is more important for teacher, not for students. If teachers have a good personality, he will automatically create good quality students, good personality students. So if I come to the definition of the word personality, a very simple definition is available. The sum total of the ways, the sum total of the ways in which an individual reacts and interacts with others. Reacts and interacts with others. You see, how do you interact with others? That is because of your personality. How do you respond to the circumstances? That is your personality. You see, under similar condition, everybody does not respond in the same manner. Your response is governed by your personality. Take simple example, if I drop a piece of stone on the floor, it is because stone is a brittle substance, it will break down. If you drop a piece of glass on the floor, it will break down. If you drop a piece of cotton, nothing will happen to it. Because you see, the height of fall is same in all the cases. Kinetic energy, potential energy, they are involved, are same in all the cases. But it is their internal behavior, it is their characteristics which are different, and because of that they have responded in different manner. So under the given set of conditions, how do you react? That is called as your personality. How do you interact with your friends? How do you interact with your colleagues? And even how do you interact with your enemy? That is your personality. You see, personality, it is governed by three factors. Whatever personality you have got today, it is evolved. It is evolved over a long period of time because of three factors. The first factor is the heredity. अनुवांशिकी जिसको हम बोलते हैं, जन्मजात गुण जो हमें माता पिता से मिले, हमारे एंसेस्टर से मिले, हमारे पूर्वजों से मिले, they are called as heredity, अनुवांशिकी गुण. And around 70 to 80% of your personality is because of your heredity. You are so because of your birth, because of your genes, because of your genetic patterns, you are behaving like this. But the second influencing factor is the environmental factor. Environmental factor means the environment in which you are grown up, the socio-cultural environment, economic environment in which you have been grown up. So, and third factor is the circumstances, instantaneous circumstances. If something happens to you at this moment, how you will react. If the same thing happens to you at a different moment, how you will react. So there are three factors which govern your personality. I will repeat. Heredity, that is coming by birth. Secondly, the environment in which you are grown up, the family environment, the school environment, the socio-cultural environment from which you are coming, the background from which you are coming. And the third factor is the circumstances in which you are there. Presently, in what mood you are there, in what mode you are there. These three things will affect your immediate response. Now, if you look carefully, around 70 to 80% of your personality is coming by birth. And if it is coming by birth, how it can be changed? You see, the psychiatrists say the environmental factors, they influence up to the age of 7 years. By the age of 7 years, your personality is defined by the environment. एक तो आपके जन्मगत गुण और दूसरे आपके 7 साल की उम्र तक जो आपको वातावरण से मिलता है, जो परिवार से मिला, जो समाज से मिला, जो स्कूल से मिला, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी शेप आउट हो जाती है. उसके बाद जो प्रभाव पड़ता है वो सर्कमस्टेंसेस का होता है, which is momentary, which is instantaneous. So two factors are important. One is the heredity, anuvanshiki, and second is the circumstances in which you are grown up, and they have influence only up to the age of 7 years. 7 साल की उम्र तक बच्चे का पर्सनालिटी पक्का बन जाता है. And what are the influencing factors up to the age of 7 years?
Up to the 7 years, there is a maximum influence of the personality of mother. We always say it is the mother who shapes, it is the mother who shapes the personality. Because up to the age of 7 years, you are under the influence of mother. Maximum influence is that of mother. Second, your family. Third is your primary school teachers, pre-primary school teacher. They shape your personality. तो पर्सनालिटी इतने बचपन के अंदर आपका बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद लेटर एज पे जो होता है वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अफेक्ट होता है. But you see, remember one thing, personality is not so rigid that you cannot change it. Personality is not so rigid that you cannot change it. It is always you can change it by your sincere efforts. ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि धार्यते तत धर्म. जो देखिए संसार में दो तरह की वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन, लिविंग क्रिएचर्स एंड डेडली क्रिएचर्स. जो जड़ है जिसमें प्राण नहीं है उसके लिए कहा गया है कि वस्तु स्वभाव धर्म, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर फिक्स्ड, दे आर रिजिड, दे कैन नॉट बी चेंज. पानी ऊपर से नीचे आता है, पानी फ्लो होता है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मैटर, दे विल नेवर चेंज. गैस हल्की होती है, वो ऊपर जाती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, दैट बिहेवियर कैन नॉट बी चेंज. वस्तु स्वभाव धर्म. लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है. यू हैव अ राइट टू चूज, you have a capacity to select, you have the capacity to opt what you want, and you can decide your personality. You can of course change your personality gradually, slowly. तो मनुष्य के लिए जो चैतन्य है उनके लिए कहा गया है कि धार्यते तथा धर्म. ये सब कुछ पहले से दिया हुआ है, वही नहीं है. You can change the things. So you see, there is always an scope for improvement in the personality. Always there is a scope for improvement in the personality. Now how that improvement can be done? How that improvement can be done? For making an improvement, you require a role model personality. If you go to the history, you will have so many role models available. You can follow anyone. Today I will talk about Swami Vivekanand. आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि एक यूथ के लिए और एक इंजीनियर के लिए, एक टेक्नोक्रेट के लिए, हाउ हिज टीचिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. विवेकानंद जी जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, मोर देन 150 years ago. He passed away in 1902 on 4th of July. You see, Vivekanand passed away more than 100 years ago. But whatever he has said, whatever he has done, it is relevant today also. How it is relevant, that I am going to discuss one by one. उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि I want the youth which is having muscles of iron and the nerves of steel. I want youth having muscles of iron and nerves of steel. जिसकी भुजाएं लोहे की बनी हुई हो और जिसकी नर्व्स, जिसकी शिराएं स्टील की बनी हुई हो, इस्पात की बनी हो, दैट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट. दैट इज व्हाट स्वामी विवेकानंद हैज सेड. तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे. स्वामी जी बर्थडे, स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है, इट इज सेलिब्रेटेड, Swami Vivekanand's birthday is celebrated as a youth day all over the country. In fact, you can say all over the globe, because Swamiji had a strong belief that if at the global level, if the changes will come, they will come because of, if the changes will come, they will come because of the youth. Youth has the power of transformation. Just wait for a minute. Just there is a disturbance. Please wait for a minute.
Hello, sorry for the interruption. There was a minor disturbance. Now we will continue. तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हमारी भारतीय संस्कृति और उसके इतिहास के बारे में. Indian civilization has a history of over 10,000 years. It is the world's most ancient civilization. दुनिया का सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुराना इतिहास. And this culture is based upon Vedas. We always say the Indian culture is based upon Vedas. You know the 4 Vedas. What is the meaning of the word Ved? If you go into the Sanskrit language, there is a basic word Vid. Vid means knowledge. Ved means which is worth knowing. Ved means the knowledge which is worth knowing. Ved means to know. Ved means to know, and Ved means knowledge which is worth knowing. So Vedas, you see, the meaning of this word is quite broad, quite open. All kind of knowledges can be summarized into the word Veda. So it is a culture based upon knowledge. It's a culture based upon knowledge. If you see in the Indian history, this is a history in which there is a tradition of solving the issues by discussions. When there are 2 persons with opposite opinions or non-matching opinions, the issues are to be resolved by discussion. शास्त्रार्थ इसको हम बोलते हैं. आप सभी ने मंडन मिश्र और शंकराचार्य के उस महान शास्त्रार्थ के बारे में सुना होगा. कहते हैं कि मंडन मिश्र इतने विद्वान थे कि उनके आश्रम में जो तोता और मैना रहते थे वो भी आपस में, पोपट जो थे वो भी आपस में शास्त्रार्थ करते थे, डिस्कशन करते रहते थे. तो ऐसे you see that there was a tradition of solving the issues by discussion, so that the right is might, the might is not right. जिसकी लाठी उसका भैंस नहीं है. The right is might. And that's why our culture is a cosmopolitan culture. It's a culture like an ocean. It's a culture like an ocean in which different kind of rivers come and they merge, they lose their identity, they become a part and parcel of the ocean. जैसे अलग अलग नदियां आके सागर में मिल जाती हैं. You see, the Indian history is also of that kind. Many invaders have come. They have brought their own philosophy, but they have been all merged into Indianism. You see, of course, you are all students of science and technology, but you must have a sound background of history and sociology also, so that you know what is your identity, you know what you are. You see, when I say Jai Hind, I feel proud of it. There are 2 reasons for it, for this. 2 reasons for this. One of the reason is that India is my country, so I have to say Jai Hind. Everybody will say. If you are born in China, you will say Jai China. You are born in Italy, you will say Jai Italy. But there is another reason also. When I say Jai Hind, I feel that it's a country with the most ancient civilization. It's a country which is having a tradition of scientific approach in the spirituality. एंड स्वामी विवेकानंद उसी विचारधारा के व्यक्ति थे जो हमेशा ये चाहते थे कि धर्म और आध्यात्म के विषय पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चर्चा होनी चाहिए. इवन द इश्यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, they must be discussed in a scientific background, in the scientific terminology, with the scientific approach. So this is what I just given you a hint that our civilization is so old. If you see the history of our country in past 2000 years, there had been always foreign invasions. बहुत सारे विदेशी आक्रमण हमारे को देखने को मिलते हैं. अनेक विदेशी आक्रमण जो एक के बाद एक होते रहे. क्यों होते रहे? हमारे देश के ऊपर इतने सारे विदेशी आक्रमण क्यों हुए? Because our country was known as a golden bird. It was such a rich country that this country was known as a golden bird. सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था. You see, when the Britishers came to India, by the time the Britishers came to India,
वर्ल्ड जीडीपी के अंदर, जीडीपी यू नो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वर्ल्ड जीडीपी के अंदर इंडियाज कंट्रीब्यूशन वाज 25%। वर्ल्ड के टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंडिया वाज कंट्रीब्यूटिंग 1/4। दैट वाज द सिचुएशन व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया and when they started looting the country, systematically looting the country transformed into a very poor nation। दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रों में से एक बन गया ये हमारा राष्ट्र। बाबा साहेब अंबेडकर ने जब अपनी पीएचडी की, बाबा साहेब अंबेडकर को हम एक लॉ के एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं, बट बेसिकली ही वाज ए एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस। ही वाज ए पीएचडी इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने अपनी पीएचडी में यह बात लिखी थी कि इंडिया बिकेम पुअर बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक लूटिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। वो हमारे यहाँ से धन लेकर के बाहर गए, रिसोर्सेस उन्होंने नष्ट कर दिए। आपको पता है कि पारोला में ऐसी साड़ी बनती थी जो एक माचिस की डिब्बी में पैक हो जाती थी, और वो साड़ी जब यूरोप के मार्केट में बिकने को जाती थी, वो कपड़ा जब यूरोप के मार्केट में बिकने को जाता था और वहां से धन यहाँ पे आता था, तो वो ब्रिटिशर्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनकी मैनचेस्टर्स की मिल्स बंद हो रही थी। उसकी वजह से वो जो कपड़ा बना रहे थे वो बिकता नहीं था मार्केट में। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने जो ये कारीगर बनाते थे कपड़ा जो माचिस की डिब्बी में पैक होता था, उन लोगों के हाथ कटवा दिए, उस बिजनेस को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। यू सी, ब्रिटिशर्स लूटेड द कंट्री लाइक एनीथिंग। उन्होंने दो वर्ल्ड वार हुए, 1916 में और फिर 1939 में। दोनों वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को यूज किया एज ए सोल्जर्स। इंडिया से रिसोर्सेस और सोल्जर्स दोनों को यूज किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रफली 2 करोड़ पॉपुलेशन वाज डाइड। Around 2 crore soldiers, they have sacrificed their life, and because of that the Britain got victory in the world wars. You see, these are the things which even Baba Saheb Ambedkar has mentioned in his PhD thesis. So under these circumstances, if you see the India of 19th century, if you see the India of 19th century which was badly looted by Britishers, it had converted into a very poor country, and not ये केवल न केवल गरीब देश में परिवर्तित हुआ, इसकी संस्कृति भी बुरी तरह से आहत हुई थी, और उस समय आवश्यकता थी सांस्कृतिक जागरण की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि भारत के सांस्कृतिक गौरव को, आवर कल्चरल प्राउड, इट नीड्स टू बी अवेकन्ड, इसके जागरण की आवश्यकता है। और ये जागरण कौन कर सकता है? उन्हें लगा कि ये स्वामी विवेकानंद जैसा तेजस्वी युवक, स्वामी विवेकानंद उस समय युवा थे जब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, स्वामी विवेकानंद जैसा तेजस्वी पुरुष ही ये कार्य कर सकता है। जब स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्रनाथ दत्ता, ही वॉज फ्रॉम बंगाल, मिस्टर नरेंद्रनाथ दत्ता। जब वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो उनकी इंग्लिश की बुक में एक वर्ड आया, ट्रांस, रूपांतरण। तो उनके टीचर ने कहा कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग अगर आप समझना चाहते हो, ट्रांस का, रूपांतरण का, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि कैसे रूपांतरण होता है। तब वो नरेंद्रनाथ दत्ता जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, और धीरे धीरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। और फिर जब शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुआ, यू माइट हैव हर्ड, इट वाज 1893, 11th of September 1893, 11 सितंबर का लोग जहां भी नाम लेते हैं तो वो ट्विन टावर्स पे हुए अटैक की वजह से लेते हैं, बट एक्चुअली इट वाज 11th September 1893 व्हेन ए वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो में हुआ था, और स्वामी विवेकानंद वहां से भारत के प्रतिनिधि बनकर के पहुंचे। वहां पर जाकर के उन्होंने जो स्पीच दिया, उनको बेसिकली तो इनविटेशन ही नहीं दिया था, ही अप्रोच एट हिज ओन। उन्होंने अपना कैंडिडेचर खुद वहां पे रखा,
and when he started speaking, he used the words, "My dear brothers and sisters of America." जब उन्होंने कहा "My dear brothers and sisters of America", तो वहां के लोग खड़े हो गए और काफी देर तक तालियां बजाते रहे, क्योंकि उनके शब्दों में इतना प्रेम था। और अमेरिकन संस्कृति जहां सगे भाई बहन एक दूसरे को भाई और बहन नहीं कहना चाहते, वहां पर एक विदेशी आकर के कह रहा है कि "माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका", तो इट इन्फ्लुएंस लाइक एनीथिंग। उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए वहां के लोग। और फिर जो भाषण उन्होंने किया, दैट बिकेम ए माइलस्टोन स्पीच। और उसके बाद स्वामी जी कई वर्ष तक अमेरिका में रहे, अनेक जगह उन्होंने भाषण दिया, यूरोप का दौरा उन्होंने किया, और उसके बाद वो इंडिया में आके सेटल हो गए। और उन्होंने यूथ को एम्पावर करने के लिए उन्होंने जो कहा कि "आई वांट द यूथ हैविंग मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील एंड दे कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड"। वही देश का, राष्ट्र का पूरा कल्याण कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ये शक्ति युवा वर्ग के ही पास में है। You see, उन्होंने कहा कि "I do not want sadhus and sannyasis, that is not the requirement of the time, but I want a youth which is strong, a youth which is committed for the service of the nation." अगर आप देखें, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स की इतना लूटिंग करने के बाद में, पर्टिकुलरली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब दो बुरी घटनाएं एक साथ में हुई थी। एक तो बंगाल में अकाल पड़ा, देयर वाज ए फेमिनाइन इन द एक अकाल बहुत बड़ा पड़ा बंगाल के अंदर, और जिसके अंदर करीब 30 लाख लोग मरे थे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि आदमी को खाना पड़ा, क्योंकि खाने को कुछ मिलता ही नहीं था। That was the situation of the country in 1947. वो दूसरा कंट्री डिवाइड हो गई on the basis of religion. India and Pakistan were separated. इन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्र का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। You see, now we are celebrating 75th years of our independence. And if I ask you, what is the history of our development in 75 years? We have got so many things on which we can feel proud. हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, जो पिछले 75 सालों में जो विकास हमारे पास हुआ, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने का, इट वाज अ रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ इंडिया। 104 सैटेलाइट विद अ सिंगल रॉकेट। इसके पहले जो दूसरा रिकॉर्ड था वो रशिया के नाम पे था। दे हैव सेंट 37 satellites by a single rocket. But you see what is the vast difference between 104 and 37. So in the field of space technology, India is doing wonders. India is going to establish its own GPS system. आज GPS के बिना दुनिया चल नहीं सकती। We are going to establish our own GPS system. Actually, it is already established, but it is working in a limited area. We want to expand it for the entire globe. If we talk about missile technology, India has got intercontinental missiles which can travel for over 6,000 kilometers. If we talk about atomic technology, India has atomic power also. It was there in 1974 only. 1974 से ही हमारे पास में परमाणु शक्ति है। If you talk about computer technology, again India is a superpower. We have got supercomputers with us. And you see, the IT industry of the world is driven by Indian engineers. दुनिया की IT और कंप्यूटर इंडस्ट्री को चलाने वाले इंडियंस ही हैं। They are the driving force for the IT industry of the world. So you see, we have really done a wonder in the field of development. If you talk in terms of vaccine technology, आपको पता होगा कि दिस कोविशील्ड, जिसका एक्चुअल नाम है एस्ट्राजेनिका, इट वाज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन में डेवलप होने के बाद उन्होंने इस बात को समझा कि मास स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना है तो ओनली द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे कैन डू इट।
The Serum Institute of India can do it. इतनी कैपेसिटी, इतनी सारी वैक्सीन एक साथ बनाने का कैपेसिटी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है. So they approached India, and simultaneously India also developed its own vaccine, Covaxin. India also developed its own vaccine. And you see, एक साल के अंदर almost 100% of the population has been given vaccine. More than 150 crore people have been given vaccine in our country. We must feel proud of it. Really, India has done wonders in the 75 years of development. But you see, still we are known as developing country, विकासशील राष्ट्र. हमें विकसित राष्ट्र नहीं कहा जाता. We are never called as developed country. America is a developed country. China is a developed country. Japan is a developed country. Europe, all European countries are developed country. But India is a developing country, विकासशील राष्ट्र. क्यों ऐसा है? What is the line of distinction between a developing country and a developed country? The line of distinction is not the technology. मैंने अभी आपको बताया कि technology wise we are not less than them. Technology wise we are at par with America or Japan or China or any other country of the world. In fact, in many aspects we are superior to them. Then where we are lacking? We are lacking in terms of application aspect of the technology. The technology which should be used for the betterment of the society. The technology which should go to the grassroots level of the society, that we could not achieve. Take a simple example, water purification. Don't we have the technology? Yes, we have. पानी का शुद्धिकरण करना, डैम में से पानी को लेना, उसको साफ करना और म्युनिसिपैलिटी उसको हमारे घर तक पीने के लिए पहुंचाएगा. That water requires some purification, it requires some treatment. So do not we have the technology? Yes, we have the technology. But are we getting the good quality of water? Are we getting the sufficient quantity of water? Here we are lacking. You see, the quality of water is so important. I am talking about quality of water supplied by municipal corporation, because that is a line of distinction between a developed country and developing country. Because quality of water ultimately is responsible for waterborne diseases. पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से इंडिया के अंदर 90% diseases they happen because of poor quality of water. If you supply good quality of water, 90% diseases will not take place. 90% people will not fall sick if you supply purified water to the people. 90% medical facilities will not be required if you supply good quality of water to the people. So you see, this is the target. Supplying good quality of water, this is a target which developed countries have achieved. 1960 के बाद में अमेरिका में वाटरबोर्न डिजीज नहीं होता. 1960 के बाद में अगर किसी को देखना है, अमेरिका में किसी को देखना है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया कैसा होता है, दे हैव टू इंपोर्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उनकी कंट्री में टाइफाइड की बीमारी होती ही नहीं. दे हैव इरेडिकेटेड दीज डिजीजेस, दे हैव इरेडिकेटेड वाटरबोर्न डिजीजेस. That means they have successfully used technology for the betterment of the society. Take the example of road construction. Do not we have technology for road construction? Yes, we have. We can construct the road and we are constructing. But are we getting the infrastructure which is really required? Are we getting the transport facilities which is really required? So here we are lacking. Though we have the technology, but technology has not reached to the grassroots level of the society. We have to fight with the population. We have to fight with the poverty. We have to fight with the illiteracy. We have to fight with the malnutrition. हमें गरीबी से लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है, कुपोषण से लड़ना है. And for that, technology is a boon. We have to use the technology, but at the same time, we need committed people. We need committed youth. Yes, we will do everything at any cost, whatever are the circumstances, but we will fight. That kind of people are required. We say we need empowered engineers, engineers who are technologically strong,
technocrats who are technologically strong, but at the same time we need engineers having a commitment. Two things are important, shiksha or diksha. You must be educated, you will become empowered. You see, education is a process. Education is a process by which a mankind is transformed into human resource. Please try to understand this thing properly. Education is a process by which a mankind is transformed into a human resource. We are all human beings by birth. We need food, we need shelter, we need clothing, we need resources. But you see, when we become human resource, we produce resources for others. We can pay back for whatever we are getting from the nature, from the society, and from the nation. So you see, for that purpose, developing the skill is required. You see, developing the skill is required because when you develop a skill, you become a human resource. You can return something to your nation. You can return something to your society. You can return something to your family. So, skill development, personality development as well as skill development is really very, very important. I will say for a student, for a youth, the first worship is to develop the capabilities. The first worship is to develop the skills. It is more important than anything else. It is more important probably than your conventional worship, I will say. किसी एक विद्यार्थी के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करना ये ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना के जैसा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है. बिकॉज when you develop your skills, then you become useful. Otherwise you are just a human being which is producing carbon dioxide. Around the day we are producing carbon dioxide, but the day you become human resource, you can contribute something for the betterment of the society, and that is what is required. You see, so you are all students of technology, science, engineering, pharmacy. You are all students of technology. Basically, you are all technical students. So you see, when you get the knowledge of technology, you become useful, you become a human resource. And what you can do for your nation, once you become technologically strong, what you can do for your nation, I explain by a simple example. मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताना चाहूंगा कि once you see you become technologically sound, what you can do for your nation. It was 1965. 1965 की घटना को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ. You know who was the Prime Minister of our country 1965? भारत के पंत प्रधान कौन थे? मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री. मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री was the Prime Minister of the country in 1965. उस समय ऐसा हुआ कि there was a pressure of America. उस समय कैसा था कि इंडिया was not producing sufficient grains. अन्न का जितना उत्पादन होना चाहिए वो हमारी कंट्री में नहीं होता था. We were importing grains from America. और उस टाइम अमेरिका का ऐसा प्रेशर आया था कि यू हैव टू चेंज योर फॉरेन पॉलिसीज. अपनी विदेश नीति को बदलिए. इफ यू डू नॉट चेंज इट, वी विल नॉट सप्लाई यू ग्रेन्स. If we do not supply you grains, your population will die out of hunger because you are not producing the quantity of grain which is required by you. Now see, when Lal Bahadur Shastri took it as a challenge, he took it as a challenge. उन्होंने डिक्लेयर किया कि we are not going to bow down. हम अपना शीश झुकाने वाले नहीं हैं. हम अपनी विदेश नीति को नहीं बदलेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोगों को वीक में एक बार फास्ट रखने की आदत है और आज से हम मंडे के दिन सब लोग वॉलंटरीली फास्ट रखेंगे. इट वॉज वॉलंटरी, इट वॉज नॉट बाय लॉ, इट वॉज नॉट बाय कंपल्शन. Everybody will keep a fast on Monday, which Lal Bahadur Shastri decided, and it was implemented so effectively कि मंडे के दिन आपको चाय की दुकान भी खुला हुआ नहीं दिखेगा. It was not by law, it was not by police power, it was voluntarily by the people. अपनी इच्छा से लोगों ने किया कि मंडे के दिन हम बंद रखेंगे तो उससे अन्न बचेगा, और जब अन्न बचेगा तो जितना अन्न है उसमें हम हमारी पॉपुलेशन को पूरा कर लेंगे.
तो it was a wonderful example of patriotism. राष्ट्र भक्ति का ये एक अनुपम उदाहरण था. But you see, engineers, technocrats, technical people, they take the things one step ahead. They take the things one step ahead, एक पाउल पुढे. So you see, the technical people took it as a challenge and they started green revolution in our country. हरित क्रांति आपने नाम सुना होगा, green revolution. And because of green revolution, the grain production increased in our country. 1965, today we are in 2022. Our population has doubled. It is more than double. But we are producing grain which is not only sufficient for our requirement, we are exporting it to the other countries. We are donating also to the other countries. This has become possible because of green revolution. And how this green revolution was done? The green revolution means construction of dams so that water can be stored, construction of canals so that water can be supplied from dam up to the agricultural field, use of advanced irrigation techniques like drip irrigation technique, use of advanced fertilizers, use of hybrid crops, use of advanced pesticides. And all these things are available only because of science, technology, engineering, pharmacy, and these things. So because of technology, the green revolution became successful. And today India can say with proud that we have implemented food security for our population. Food security in India, more than 60% population is getting the advantage of food security. हम मुफ्त में उनको अन्न सप्लाई कर सकते हैं. This has become possible because of the power of science and technology. Our engineers have worked, our technocrats have worked, and they have shown us this day. You see, you can take many examples. This green revolution was followed by white revolution. Have you heard the name of white revolution, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है? White revolution means the milk production was increased. You see, the farmer, जो शेतकारी खेती का काम करता है, वही आदमी जानवरों को पालने का भी काम करता है. So the green revolution and white revolution, they go hand in hand. So white revolution was also developed. And because of that, today we say with proud, India has become world's largest milk producer. India is world's largest milk producer. We are exporting milk to the other countries. दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला हमारा कंट्री बन गया है. You see, that is also a power of technology, I will say. Similarly, there was a blue revolution. Have you heard about this? Blue revolution means in the dams where the water is stored, we will do the fish culture. मछली पालन करेंगे, so that the fish production will increase. And today we are exporting fish to the all over world. And now we are thinking about the pink revolution in these things. तो ये सब चीजें कैसे सफल हुआ? Because of the power of science and technology. We had technocrats, we had technologically sound persons, though we had persons who are having the knowledge and at the same time they had commitment to work for our country, commitment to work under all circumstances. जो ये शिकायत नहीं करें कि नहीं अच्छा, कि नहीं भाई सिस्टम खराब है, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खराब है, सोशियोलॉजिकल सिस्टम खराब है. अरे उसी को तो सुधारना है. अगर सब कुछ रेडीमेड अच्छा होता तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती. So today what we need is empowered engineers, technologically strong engineers, and at the same time engineers who are having commitment to serve the nation under all the circumstances. जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारे राष्ट्र के लिए काम कर सकें, इस तरह के लोगों की हमें इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है. And that is what Swami Ji has emphasized. Swami Vivekanand has always said, I do not want sannyasis. I want youth who is committed for the nation, who can transform the nation, who can transform the world.
See, my dear friends, you see, the bright future is there for you. You are getting you are getting technical education, so there is a bright future available for you. But remember, this bright future is associated with the sense of responsibility also. You have a great responsibility on your shoulder. First of all, you must feel proud that you are going to become engineer. You must have a proud, एक गौरव होना चाहिए कि yes, I am a technical person, I am a pharmacist, or I am engineer, or I am a doctor, and my responsibility is more than that of a common man. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सब लोग एक यात्रा में जा रहे हैं, उसमें कोई घोड़े पे बैठा है, कोई ऊंट पे बैठा है, और कोई आदमी शेर के ऊपर बैठा है। तो जो शेर के ऊपर बैठा हुआ है सब उसको गर्व से देखेंगे कि भाई शेर की सवारी कर रहा है। बट रिमेंबर, द मोमेंट यू कम डाउन फ्रॉम दैट लायन, द लायन इज गोइंग टू ईट यू। दैट मीन्स वंस यू आर डूइंग, जब एक बार आप शेर की सवारी कर रहे हैं, वंस यू आर राइडिंग ऑन लायन, यू हैव टू कीप ऑन राइडिंग। आपको अपना स्टेटस हमेशा बना करके रखना पड़ेगा। वंस यू आर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यू आर सुपीरियर देन अदर्स, but that status you will have to maintain in terms of quality, in terms of commitment. That is what is the message which I wanted to give you in the name of Swami Vivekanand. विवेकानंद जी ने इन चीजों के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण एक यज्ञ की तरह है। यज्ञ का क्या मतलब हुआ? यज्ञ जो हम करते हैं ना, आपने देखा होगा अग्नि है, अग्नि के अंदर हवि दी जाती है, इदम न मम ओम स्वाहा, ये मेरा नहीं है, हमने अग्नि को समर्पित किया। तो यज्ञ की मूल भावना यही है कि जहां एक समर्पण करने की इच्छा हो, जहां हमें हाथ से छोड़ने के लिए हम तैयार हो, इफ दैट कमिटमेंट इज देयर, रियली समथिंग कैन बी अचीव्ड, देन रियली इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ए डेवलप्ड नेशन। आपने सुना होगा 20 विजन इंडिया 2020, a vision given by Abdul Kalam ji. He was a great visionary person. He had given the vision of Vision India 2020. उन्होंने कहा था कि India has got potential to transform into a developed nation by 2020. But it did not happen because India could not use 100% of its potential. But now the transformation is going on. In this decade between 2020 to 2030, India is committed to transform. It has to happen, and India is committed to transform into a developed nation, and in which the technical people are going to take a lead. The youth is going to take a lead. Certainly the transformation has to take place in two different terms. First of all, technologically we are going to become superior. The technology is being used for the development of society, so that in true sense society becomes a developed society. And one more thing is that, you see, India has the ability to become a Jagat Guru in terms of spiritual power. Have you heard the name of Dr. Vijay Bhatkar? The person who developed Param computer, supercomputer for our nation. He once said that not only India has a capability to transform into a developed nation, it has a capability to become the leader of the world in terms of spiritual powers also. And that is likely to happen by 2047. Vision India 2047, a very few people know about it. And that was a vision given by Sir Vijay Bhatkar, the father of supercomputer of India. So I will say, to conclude with, I will say कि राष्ट्र निर्माण एक महान यज्ञ के जैसा है और जिसमें आप सभी को आहुति देनी है। You are technical person, your responsibility is more. You are the youth, we have a faith in you. आप हमारी आशा हैं, आप आगे आगे चलना है। You have to lead this society. We have a lot of expectations from you. So this is what a brief message I wanted to give you. And I will conclude here only. If you want to say, if you want to ask questions, the session is open for that. कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो आप जरूर पूछिए। क्वेश्चन, यस, कुणाला काही प्रश्न असतील तर सरांना विचारू शकता. This session is open for question and answer.
So please ask. आदित्य आहे का? येस मॅम. ओके, काही प्रश्न असेल ते विचारू शकता तुम्ही. सर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, बोलिए. हाँ बोलिए. सर इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री. Sir, we are young youth, but if our or मतलब सर मराठीत एक सांगू का, विचारू का? हाँ सर बोलो ना. जर आम्हाला जर संधी वरून भेटली नाही तर आम्ही काय काय करणार? म्हणजे सर आता जे आपले बेस्ट जे फार्मासिस्ट आहे, बेस्ट जे वर्क इंजिनियर्स आहे सर, हे बाहेर देशात काम करतात का? कारण बाहेरचे देशात पे त्याला वेल पे करतात. तसं माझं क्वेश्चन असं आहे की आपल्या देशात आपले जर वरचे लोक आपल्याला पे नाही करणार तर आम्ही त्या देशात कसं काम करणार? देखो ये जो है ना कि सिस्टम खराब है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, सामाजिक सिस्टम अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा ही रहने वाला है. ये अपने आप नहीं बदलेगा. बदलने का प्रयास हमको उसके लिए करना पड़ेगा. हमको प्रत्येक परिस्थिति, यहाँ ये लोग फॉरेन में जाके क्यों काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर, कि वहां पे सैलरी अच्छा मिलता है, वर्किंग एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा मिलता है, तो करेंगे, करिए, कोई मना ही नहीं. लेकिन अगर आपको कमिटमेंट है कि भाई मुझे तो यहीं रह के काम करना है, कम पगार में भी मैं करने को तैयार हूं, ये मेरा राष्ट्र है. आप ये सोचिए कि जो सैनिक सीमा पे अपनी जान दे देता है, जो क्रांतिकारी अपनी जान दे देता है, वो किसके लिए देता है? वो भी तो उनको भी तो अपने प्राण प्यारे होते हैं. तो अपने प्राण त्यागने को तैयार है, हम अपना कंफर्ट नहीं त्याग सकते कि नहीं, ओके आई एम रेडी टू वर्क इन द लेस सैलरी आल्सो, आई एम रेडी टू वर्क अंडर द वर्स्ट सिचुएशंस आल्सो, लेकिन मैं अपने देश के लिए ही काम करूंगा. तो ये कमिटमेंट जब लोगों के मन में होगा, और इसी ये बात कहने से नहीं होता, ये करके दिखाने का प्रश्न है. यू कैन ऑलवेज आस्क मी कि सर आप हमें बोल रहे हैं, आपने किया है क्या? You can always ask this question. You see, when somebody speaks on this issue, he or she must give a role model. A role model is required. और कुछ आपको कुछ, हाँ पूछिए. कुछ प्रॉब्लम, यानी आपको सर का लेक्चर कैसे लगा उसके बारे में भी अगर आपको बोलना हो किसी को तो बोल सकते हैं. हिंदीमध्ये प्रश्न विचारला तरी चालेल, सरांना हिंदी मराठी समजते. तुम्हाला जर प्रॉब्लम असेल इंग्लिशचा तर म्हणजे काय विचारावं समजत नसेल तर आप पूछ सकते हो कौन सी भी लैंग्वेज में. सैयद आपको पूछना है कुछ? नो मॅम. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक प्रश्न सबका ही रहता है कि परिस्थिति बराबर नहीं है, उसमें कैसे काम करना, सोसाइटल सिस्टम बराबर नहीं है, वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं तो वहां उनको ज्यादा पगार मिलता है, ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है. एक और बात है कि सेटिस्फेक्शन आपको अगर अपने जॉब में सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो सिर्फ पगार से या पर्क्स के टर्म्स में नहीं मिलता. एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कर्मयोग. एक ऐसी स्टेज आती है जब आदमी अपने काम के अंदर ही सेटिस्फेक्शन ढूंढने लगता है. ऑफ कोर्स द आउटपुट एंड रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. सैलरी, पर्स, वो सब तो मिलना ही चाहिए, but a satisfaction with the work. You see, if you learn how to enjoy your work, you will become the happiest person in the world. आप सोचिए कि जब आप पियानो बजाता, कोई आदमी अच्छा पियानो बजाता है तो क्या पियानो बजाने से वो थकेगा? उसकी थकान भी होगी तो कम हो जाएगी. जब आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है तो थक जाती है क्या? वो तो और उनको एनर्जी मिलती है कि मेरे बच्चे ने एक रोटी ज्यादा खाया तो बहुत अच्छा है, और बना लेंगे हम. तो यू सी, व्हेन यू गेट अटैच्ड, यू गेट इंटीमेटेड विथ योर वर्क. कर्मयोग होना मतलब काम के अंदर डूब जाना, देन सडनली यू गेट अ प्लेजर.
So that is what also a youth should understand. So any more questions if you want to ask, please? Any question? आशीष कुमार वसवे. No, ma'am. गिव योर कमिटमेंट टू सर. जो आपने मैसेज में लिखा है वो बोल भी सकते हो. मैसेज में लिख रहे हैं बच्चे. हाँ, मैसेज मिल रहे हैं लेकिन यो Okay. So I think, sir, all students get your things very well. That Saukare, thank you, sir. Great session. All messages are there. So सरांनी आपल्याला खूपच छान आणि अगदी सिंपल लँग्वेज मध्ये जे काही स्वामी विवेकानंद आहे त्यांचे विचार, जो भी स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है देश के प्रति और अपने उनके अनुसार अपनी पर्सनालिटी हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से सर ने हमको गाइडलाइन दी है. डेफिनेटली ऑल स्टूडेंट, इट मीन्स स्टूडेंट बिलोंगिंग टू pharmacy as well as other polytechnic students are also take the advantages of this lecture, and definitely they try to work according to sir's guideline. जो सर सच्ची में ही बच्चे अपने बारे में न सोच के अपने देश के बारे में भी सोचेंगे. अभी किस बच्चे ने पूछा शायद कि इधर ज्यादा सैलरीज वगैरह नहीं है तो कैसे करें, अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, लेकिन सर का आंसर उसके बारे में बहुत अच्छा था कि अपने मन में देश के प्रति भावना होनी भी जरूरी है. तो हम एज अ टीचर वही काम करते हैं कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी हो बच्चे, यानी कॉलेज में जिम्मेदारी हो तभी तो देश के बारे में भी सोचेंगे ना. पहले कॉलेज के बारे में उनकी क्या जिम्मेदारी वो बताने की हम तो हमेशा कोशिश ही करते हैं. वैसे हमारे बच्चे भी अच्छे जानते भी है, करते भी है जो बोलते हैं. अभी ऑनलाइन है तो ठीक है, लेकिन जब फिजिकली आएगी तो ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, हमें आशा ही है. वैसे तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एंड एसपीडीसी सेल्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव के अनुसार आपको धन्यवाद देती हूँ सर कि आपने बहुत ही कम समय में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छे से हमारे बच्चों को गाइड किया. सर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. हाँ, ऑल ऑफ यू लिसन हियर. मुलांनी लक्ष द्या इथे. सरांनी लिव्ह केले आय थिंक. एक लक्षात घ्या तुम्ही, आपलं दुसरं लेक्चर 1 वाजेला आहे. ओके, आणि आपण हे स्पीकर सर्व बाहेरनं येत आहे आपल्या इथे वेगवेगळ्या याच्यामधनं, तर तुम्ही रिस्पॉन्स देत जा. लेक्चरला आम्हाला रिस्पॉन्स देत नाही तुम्ही, ठीक आहे, पण बाहेरच्या व्यक्तींना तरी रिस्पॉन्स द्या. तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील तर ते क्वेश्चन विचारत जा. क्वेश्चन नसेल तरी जे काही लेक्चर दिलंय त्याबद्दल आपण म्हणतो ना आपलं काय व्यक्त करायचं, आपली प्रतिक्रिया काय व्यक्त करायची. ऍटलीस्ट 2-3 जणांनी तरी ती प्रतिक्रिया व्यक्त करा. म्हणजे बाहेरचा जो सेशन घेणारा असतो व्यक्ती त्याला ऍटलीस्ट एवढं तरी, आता तुम्ही ठीक आहे मेसेजेस मध्ये खूप छान दिले मेसेजेस का आवडलं लेक्चर वगैरे असं तसं, पण कसं असतं लिहिण्यापेक्षा बोललेलं जास्त बेटर असतं. तर त्यासाठी हे लक्षात घ्या तुम्ही का 2-3 ठरवून घ्या. तुम्ही सेकंड इयर मधले फर्स्ट इयर मधले 2-3 असं ठरवून घ्या. ऍटलीस्ट तुम्ही तुमचं मनोगत तरी व्यक्त करा त्या लेक्चर बद्दल, बरोबर. जसं की रोहन आहे, सय्यद आहे, ओके, पावरा आहे, विसावे आहे, पुन्हा फर्स्ट इयरचे काही स्टुडंट आहे. थोडं थोडं बोलत जा. निवृत्ती आहे, आदित्य तर नेहमी बोलतोच. तर तसं आदित्य तू जे क्वेश्चन चालू दे लेक्चरला काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, तर तसं ठरवून घ्या तुम्ही, कारण की असं पण नको वाटायला का ह्या मुलांना आपण एवढं लेक्चर देतो आणि त्याचा काही उपयोगच नाही. ओके, तर तसं रिस्पॉन्स देत जा. समजलं का रोहन? Yes, ma'am.
सय्यद Yes, आया शुभम ओके. Yes, ma'am. तर आपलं पुढचं सेशन जे आहे ते पण फारच छान आहे. निम्स युनिव्हर्सिटी हैदराबाद मधले ते स्पीकर आहे. तर त्यांचं पण सेशन, तुम्हाला लँग्वेजचा जर प्रॉब्लेम येत असेल तर कुणीतरी माईक ऑन करायचं आणि सांगायचं की इंग्लिश मध्ये जर टोटल होत असेल किंवा मराठीमध्ये होत असेल तर मिक्स लैंग्वेज यूज करायला सांगा, काही प्रॉब्लेम नहीं. ओके. तो आपको ऐसे लगा कि इधर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश या टोटल मराठी हो रहा है, तो आप बोल सकते हो माइक ऑन करके की सर बोथ लँग्वेज में एक्सप्लेन करो. कारण की हे सर्व लेक्चर जे आम्ही अरेंज करतो आहे, वर्कशॉप अरेंज करतो आहे, ते विद्यार्थ्यांसाठीच आहे. तुमचा सर्वांगीण विकास व्हावा हीच आमची इच्छा आहे त्याच्या मागची. तर ते तुम्हालाच कळालं नाही तर त्या लेक्चरचा उपयोगच नाही ना, बरोबर की नाही. त्यासाठी तुम्ही जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम, आणि व्हिडिओ ऑन करायला सांगते, तुम्ही व्हिडिओ ऑन का करत नाही. आपल्याला हे सगळे रिपोर्ट पाठवायचे असतात आणि त्याच्यासाठी फोटोज घ्यावा लागतात मला. तर तुम्ही व्हिडिओ किती वेळेस मी मेसेज मध्ये टाकलंय का व्हिडिओ ऑन करा, व्हिडिओ ऑन करा, तरी तुम्ही व्हिडिओ ऑन का करत नाही. आता नका करू, आता करून काय फायदा नाही. हा, लेक्चर झाले तर नेक्स्ट सेशनला लक्षात घ्या, व्हिडिओ ऑन करायचे सर्वांनी. ओके ओके. हा, आणि जरा रिस्पॉन्स देत जा आणि पुढच्या सेशनला क्वेश्चन विचारा. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वरच आहे. ठीक आहे, तुम्हाला इंग्लिश मध्ये क्वेश्चन तयार करायला, फॉर्म करायला जमत नसेल, मराठीत विचारा, हिंदीमध्ये विचारा. आपले सगळे महाराष्ट्रातले इथले जवळपासचे असतात स्पीकर, मराठी सर्वांना कळतं. ओके. आता मला रिस्पॉन्स देते सगळे, येस मॅडम, येस मॅडम, ओके ओके, बरोबर मेसेज मध्ये. हे असं आहे तुमचं, तर हे लक्षात घ्या. ओके. 1 वाजेला, 1ला नका. आणि रोजचं एक सांगते, आता एवढा आठवडाभर तुम्ही जवळजवळ 10:20 जॉईन होत जा. स्पीकर आलेले असतात आणि स्टुडंटच आलेले नसतात. तर सर्व मुलांनी 10:20 जॉईन व्हायचंय. 10:30ला सेशन सुरू होईल आपलं. आता पण दुपारच्या सेशनचा 1 वाजेचा टाइम आहे, तर तुम्ही जवळजवळ 12:50ला जॉईन व्हा. चेतना पावरा, तुला काही बोलायचंय का? हँड राईज करते चेतना. हॅलो. नाही मॅम. नाही का? ओके. आता कुणाला काही डाऊट नसेल तर लिव्ह करू शकता तुम्ही, आणि 12:50ला जॉईन करा मीटिंग. ओके. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes. Yes. Yes.